ओके, सो प्रोटीन्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इनके मोनोमर्स को देखें, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं? देयर मोनोमर्स आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स, राइट? अच्छा जी, वेरी गुड। नाउ अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, तो तुम लोग मुझे बताओगे सर अमोनिया इज एन NH3, राइट? सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि अच्छा मुझे बताओ अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, स्पेलिंग बढ़ा दी मैंने तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, स्पेलिंग में लेटर्स बढ़ा दी तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही बढ़ जाएंगे, NH4 पॉजिटिव। Similarly, if I'm going to cut down on some letters in the spelling and make it an amine, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH what? 2। वेरी गुड। सो अमाइन ग्रुप के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइन ग्रुप होता है विच इज NH2 एंड इट हैज एन एसिड ग्रुप। मेरे पास जितने भी बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? COOH, राइट? So how does an amino acid look like? How does an amino acid look like? An amino acid is practically a डब्बा, right? जिसके एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है विच इज NH2 और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है विच इज COOH, right? So this is how an amino acid looks like. All right? अच्छा, अब जिस तरीके से we talked about the polymerization of the lipids, हम इसकी polymerization देखेंगे। So I'm just going to copy this. Okay, अब let's say I have two amino acids. एक amino acid मेरे पास ये रहा, दूसरा वाला amino acid मेरे पास ये रहा। Let's call this as amino acid number 1. Let's call this as an amino acid number 2. ठीक है? Now what happens is मेरे बच्चों, whenever two amino acids are close together, they also polymerize. They also polymerize by forming what? By forming water. So the process that is going to join them up will be called as condensation. And what is it going to release? It's going to release a molecule of water. अब यहां पर वाटर कैसे मिलेगा इसको देखो। जो हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है ना, वो अपना क्या लूज करता है? हाइड्रोजन। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके बराबर के अंदर, वो अपना क्या लूज कर देगा? OH। H और OH मिलके क्या बना लेंगे बेटे? वाटर। वेरी गुड आयशा बेटे। H and OH will give us water. वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास पहले वाले अमीनो एसिड का, दिस अमीनो एसिड नंबर 1, उसका जो COOH था उसने क्या लूज कर दिया? OH। जो दूसरा वाला अमीनो एसिड था उसके अमाइन ग्रुप ने क्या लूज कर दिया? H। वाटर बन गया। नाउ दे आर गोइंग टू जॉइन अप टुगेदर। दिस बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? This bond between them is called as a, कौन सा वाला bond is called as a peptide bond.
Now, so what happens is whenever two amino acids are close together, the first amino acid basically loses its OH and the next one loses its H. When the H of of the second amino acid and the OH of the first amino acid are lost, a bond is formed between them, and that bond is called as the peptide bond, right? अभी हमारे पास क्या बना है? Right now, we have two amino acids joined up together. So we got ourselves a dipeptide. Now, similarly, अब मुझे बताओ, अब अगर, what if I had many amino acids joined up together? So what I'm going to do is, I'm just going to copy this thing right here. Just going to put it down right here. ठीक है, मेरे पास amino acid number 1 ये रहा. अब मैं क्या करूं? इस अमीनो एसिड नंबर 2 के बराबर के अंदर एक अमीनो एसिड नंबर 3 रख दो. इस अमीनो एसिड नंबर 3 के बराबर के अंदर एक अमीनो एसिड नंबर 4 रख दो. सिंस बोथ ऑफ देम आर अमीनो एसिड्स, उनके एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा NH2 और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH. अमीनो एसिड नंबर 4 का भी एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा NH2 और दूसरी तरफ क्या होगा? COOH. राइट? अब क्या होगा? हमारे पास अमीनो एसिड नंबर 2 के COOH से OH निकलेगा, अमीनो एसिड नंबर 3 के NH2 से H निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटे? पेप्टाइड बॉन्ड. अमीनो एसिड नंबर 3 के COOH से OH निकल जाएगा, अमीनो एसिड नंबर 4 के अमाइन से H निकल जाएगा. And again, what is going to form between these two amino acid? Another peptide bond. जब मेरे पास दो अमीनो एसिड्स ज्वाइन अप होंगे तो क्या बन रहा है? डाइपेप्टाइड. जब उससे ज्यादा होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे लोग? पॉलीपेप्टाइड. ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ोगे तुम लोग. यू गोइंग टू स्टडी दिस इन केमिस्ट्री एज वेल. ओके. अच्छा जी. नाउ नाउ अब देखिए. नाउ प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास, लेट्स से इफ यू वुड टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, तो हमारे पास प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, proteins are basically what? Structural molecules, but they can be respired. They can be respired to produce kitni energy? The same as carbohydrates. To produce the same energy as what? Carbohydrates. All right? लेकिन देखो बेटे, प्रोटीन्स का जो बेसिक काम है वो एनर्जी देना नहीं है. उनका जो बेसिक काम है वो तो स्ट्रक्चर्स बनाना है. So when is your body actually going to respire proteins? It's going to respire proteins in states of what? Starvation. Like if you look at the people of Gaza these days, so may Allah have mercy on them. It's like their muscles or their structures are being wasted. It's like their skin is literally hanging onto their bones. वो state of starvation है हमारे पास. ठीक है. वहां हमारी बॉडी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है और यूज करती है रेस्पिरेशन के लिए. उसके अलावा ये क्या करते हैं? दे मेक टिश्यूज सच एज टेंडन्स, ligaments, blood vessels, gums. They make hair, nails. और उसके अलावा क्या बनाते हैं? And micromolecules, those molecules that we cannot see, such as
enzymes, most hormones, not all of them, but most of them, right? उसके अलावा ये क्या बनाएंगे? They're going to make antibodies for protection. Antibody के अलावा ये और क्या बनाते हैं? मेरा हीमोग्लोबिन, right? So ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास प्रोटीन्स की. Okay, now that we know our proteins, let's talk about a similar compound, a similar molecule to proteins. Let's talk about vitamins. Let's talk about vitamins. Vitamins क्या होते हैं? Anyone, what do you think are vitamins? हाँ भाई लड़की, vitamins क्या होता है? They're not polypeptides. Vitamins are not polypeptides. Like vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin K. होते क्या है? करते क्या है? देखो, like everything else that we discussed ऊपर, very good Manahil, very good. Vitamins also are organic compounds. Organic compounds हैं, so they would be made up of hydrocarbons, carbon, hydrogen, oxygen. But what happens is that they are needed in small quantities. Why are they needed in small quantities? Because they are reusable. ये reuse होते रहते हैं. ठीक है. और ये करते क्या है? Generally vitamins क्या करते हैं? They basically help enzymes. No, they're not, they don't cause growth. हम कहते हैं, so they're organic molecules needed in small quantities that aid, that, let's see, sorry, that help what? Enzymes. ठीक है. हम ये भी लिख सकते हैं भाई, they help enzymes in their functions. कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं, there's something that we'll study in A2 level, जो कुछ vitamins के बगैर काम ही नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा खैर, अब we divide these vitamins into two categories. हम कहते हैं कि भाई कुछ vitamins are derived from fats, so we call them fat soluble. दूसरे हमारे पास जो होते हैं, they're soluble in water, so we call them water soluble. They're not made up of lipids. फैट soluble vitamins कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. वाटर soluble कौन से होते हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी. अब इन सारे विटामिन्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हाँ, बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर वाटर soluble कौन से और फैट soluble कौन से. In our syllabus, we're only supposed to be concerned about two vitamins, vitamin D and vitamin C. Okay? Now let's talk about them. Let's talk about them. So now, whenever we talk about vitamin D first, how are we going to talk about it? हम सबसे पहले बात करेंगे कि अच्छा इनकी सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, what is their function, और अगर ये विटामिन हमें डाइट में नहीं मिले, if it becomes deficient in our diet, then what's going to happen? Right? So, vitamin D. देखो, the word D for vitamin D and D for dairy products, right? Anything that you can get from a dairy store, एक दूध वाले की दुकान, contains vitamin D. So, what can you get from a milkman? You can get milk. They also sell what? Yogurt. They also sell cheese. They sell eggs. All of these contain vitamin D. अच्छा, अब हमारे पास कुछ किताबों के अंदर सनलाइट भी लिखा हुआ होता है. देखो, सनलाइट टेक्निकली डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन डी, इट एक्टिवेट्स इट. मतलब अगर हम लोग सिर्फ सनलाइट को बोल
the only fight I cannot. Whatever the vitamin D that from my diet, if I'm going to, let's say, it and activate होता है. अगर लिखना नहीं लिखो तो उनके syllabus के अंदर they do accept sunlight, so we're just going to. So, guys, vitamin D, right? So, from is in the recording. Now, the question is that if vitamin D, or what is the function of the vitamin D? Vitamin D करता क्या है? इसका काम क्या है? What's the function of vitamin D? हाँ भाई, देखो. What happens is need for the bones and teeth. So what does it do with the bones and teeth? How? How is it needed for the bones and teeth? देखो, हमारी bones के ऊपर the thing that strengthens our bones is basically calcium, right? And where are we getting our calcium from? We're getting our calcium from our diet. Now, once I'm going to consume calcium, it's going to go into my digestive system and then it's going to go into my blood. What's going to happen once it goes into my blood? Who's going to take it from the blood onto the bones? Vitamin D is, right? So the function of the vitamin D is that it transports calcium ions kahan se? From the blood onto where? Onto the bones, right? So which in turn cause the bones to become strong, right? Welcome, Aslam. Now, अगर हमारे पास vitamin D की deficiency हो जाए, मतलब if they are not taking enough vitamin D in your diet, it's going to result differently in children, and it's going to result very differently in adults, right? Very good. So in children, it leads to a condition that is called as rickets, which is what? Which is bending of bones. देखो बेटे होता क्या है हमारे पास, इसको समझिएगा. It's okay. जो the bones, they are supposed to grow. जो bones होती हैं उनको भी तो grow होना है. अगर मेरी सारी की सारी bones calcify हो जाएंगी, अगर उनके ऊपर permanently calcium आके जम जाएगा, तो वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी ना. मतलब भाई, लेट्स से भाई you have something that is stretching and you enclose it. For example, you have water, right? Water is flowy, you put it in a cup. Will it be able to flow out of it? नहीं. Make sense? So what happens is in the growing age, up to the age of 18 till about 24, the bones are not completely calcified and they're a bit bendy, they're a bit soft. तो वो pressure को resist कर सकती हैं. So let's say if a young boy, for example, about age 13 or 14, if they're going to fall down the stairs, and if their hand is going to be outstretched, तो वो there's a chance कि वो टूटे नहीं, वो मुड़ जाए. Because the bones can absorb that pressure, right? They're bendy. लेकिन adults के अंदर once हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक particular age के बाद height नहीं बढ़ती है. क्यों नहीं बढ़ती है? Because all your bones are calcified. अब सारी bones के ऊपर आके calcium जम गया. मतलब इसका एग्जांपल ऐसा है कि भाई यू हैव अ स्टील वाला स्केल, अ रूलर, एंड यू हैव अ लकड़ी वाला स्केल. स्टील वाला स्केल इज फ्लेक्सिबल. अगर तुम उसको मोड़ोगे
तो वो अपना वो बेंड तो हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। लकड़ी वाला स्केल इज नॉट फ्लेक्सिबल। उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। राइट। So now in adults, since the bones are completely calcified, it leads to a condition called as osteomalacia या फिर osteoporosis. It's basically pores in bones. Bones के अंदर holes हो गए, हल्का सा भी contact होगा, bones क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। Right? So what is osteoporosis? It leads to easy fracture of bones. Right? Easy fractures of bones. हाँ, अगर बच्चों के अंदर काफी ज्यादा कांटेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मिलाहिल भाई, कोई बच्चा पहली मंजिल से गिर गया, राइट। अब so there's a difference between falling down the stairs or trying to break a fall with an outstretched hand and falling from a very very tall height. Make sense? तो इसी तरीके से अब देखो, people who suffer from osteoporosis, they are more, let's say, prone to fractures. For example, भाई कोई आया, उसने somebody just hit their hand on the wall like really loud, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, कोई हल्का सा गिर गया, एग्जैक्टली, इट्स ऑल्सो वेरी पेनफुल व्हेन यू गेट हिट। ठीक है, कोई जमीन पे बहुत देर से बैठ गया, हड्डियों में से बहुत जोर से दर्द होने लगा, राइट। इट ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली अकर्स इन वुमेन अबव द एज ऑफ 40। जितना बढ़ते जाओगे उतना चांस बढ़ता जाएगा। ऑर्थोपेडिक ऑस्टियोपोरोसिस इज प्रैक्टिकली द सेम थिंग, यस। हमारे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर ज्यादातर जो फ्रैक्चर के केस आ रहे होते हैं, वो 70 साल की अम्मा हुआ करती थी, जिनकी जो थाई बोन होती है, फीमर होती है, वो टूट जा रही थी, राइट। खैर, guys, stop it. All right. Now, the next vitamin that we have is vitamin C. Okay. Fracture of the hip as well. Yes, with some. अच्छा, अब विटामिन सी को अगर हम लोग इसी तरीके से देखते हैं, सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी। मैंने यहाँ डेफिशिएंट लिख दिया, इट शुड बी डेफिशिएंसी। नाउ, विटामिन सी का सोर्स हमारे पास क्या है, सिट्रस फ्रूट्स। सी फॉर विटामिन सी, सी फॉर सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड बेसिकली। अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स के अलावा ये और किधर होता है, इन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, कैबेज। ऑलराइट। अच्छा जी, इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। अच्छा बेटे, अब इसको देखिए, कोलाजन हमारे पास क्या होता है, कोलाजन इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द सॉफ्ट टिश्यूज। माय गम्स आर वेरी सॉफ्ट, बट नथिंग, आई देर स्ट्रॉन्ग एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हो तो वो इतनी जल्दी, हम कहते हैं ना, फटते नहीं हैं। Our skin has collagen. Our blood vessels have collagen. Our tendons, our ligaments in the joints, they have collagen. ठीक है? Collagen is a protein that pretty much forms a web, a crisscross structure like this. उसके फाइबर्स होते हैं इस तरीके से, और वो सॉफ्ट टिश्यूज के जितने भी जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनको एक तरीके से रैप कर लेता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लाइक दिस। ठीक है, लेकिन होता क्या है मेरे बच्चों, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, दे हैव टू बी कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। सो अब इसको देखो, फॉर एग्जांपल पे मैंने क्या देखा, कि मेरे पास जो कोलेजन है बन गया ना। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट हेयर। हमारे जो पुराना वाला हेयर होता है, एट द टिप द केराटिन होता है, उसमें स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज अगेन एज इट्स ग्रोइंग, इट्स एज द हेयर ग्रोइंग, जो एंड जिनकी टिप्स होती हैं, जो हेयर के एंड्स होते हैं, वो तो पुराना वाला केराटिन है। इट हैज टू ब्रेक डाउन एट वन पॉइंट और द अदर। ठीक है,
It also prevents wrinkles in the skin. It देखो, the skin, as long as collagen is present, the skin remains taut, खिंची हुई, right? It starts losing its shape, starts falling down if there are less or if there is less collagen there. ठीक है? अब होता क्या है? The collagen fibers have to be constantly produced again and again. अगर ये collagen fiber produce नहीं होंगे, so what's going to happen? The tissue is practically going to, have spaces in it. It's not going to be as strong as it was before, and these gaps are going to form, which are going to allow, substances to pass through it, especially in the soft tissues. अब इस जब ऐसा होता है, तो it leads to this condition that we call as scurvy. Now, for example, let's talk about our gums. Our gums are soft tissue, right? अगर gums के अंदर collagen fiber नहीं होंगे, तो gums कैसे हो जाएंगे? They're going to become soft. उनके अंदर टिश्यू फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल जाएंगे. They're going to become swollen. क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर भी कोलेजन होता है, the blood is also going to leak out and fill in the gums, and the gums are going to be blackened. And अगर gums की strength नहीं है, हल्का सा भी contact आएगा, for example, one stroke of the toothbrush on your gums, it's going to lead to bleeding. तो scurvy basically so major symptom क्या होता है? Soft, swollen, black and bleeding what? Gums. उसके अलावा इसमें और क्या हो रहा होता है? It leads to easy bruising. I high five someone, for example, a person having scurvy. I high five that person really hard. What's going to happen? The person is going to have bruises all over their hands. हम लोग अगर देखें, in old age, along with the wrinkles, अगर if you have people above 70 at your house, like your दादा दादी और नान नानी, उनके हाथों के ऊपर ना कभी कभार छोटे लाल लाल spots पड़ जाते हैं. That's a blood vessels rupturing, right? It leads to easy bruising, wound healing. Let's say, what we call as late wound healing. और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? It leads to weakened joints. All right? नहीं, वो platelets तो blood clotting करवाता है. वो तो clots तो होते हैं, but the blood starts leaking out. वो bruises होते हैं. ठीक है? So we'll stop here today. In the next class, we'll talk about mineral ions, and we're going to talk about the food tests before we go towards the digestion in mammals. I hope you guys have a good day.